So Gabriel phthalimide reaction. The special feature of this reaction is it can give us only primary aliphatic amine. Okay, let us see that also why. So I am starting the reaction. What is the starting substance? You all can tell me. Phthalimide. Phthalimide, which is obtained from Phthalic acid. phthalic acid, and the imide is like this. Correct? Yes, ma'am. Phthalimide. See, I am writing the reaction again. So obviously, don't you think it should be learned now itself? Yes, ma'am. Phthalimide is treated with an alkali, and the alkali is taken in an alcoholic medium and heat triangle. See how it is reacting. This goes, that is a molecule of water. So we get, can you name this? Can you name? Potassium. Yeah. Potash. Potassium phthalate, potassium phthalate. Why 8? देखो 8 तभी आएगा जब COOK है 8. ये थैलेट का है, ये तो अमाइड है, पोटेशियम थैलिमाइड. Phthalimide. Why 8? 8 is a ester. This is not an ester. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Now we treat it with alkyl halide. हटाओ मुझे वीडियो. Now see, we treat it with alkyl halide. So when I treat it with alkyl halide, see here, this goes. Now my dear, it is so clear. We are treating it with alkyl halide, so the byproduct is minus Ki, and the potassium gets substituted by Ethyl. Ethyl. yes, the ethyl group. And now that ethyl will give you the product, which will be ethyl Amine. Now tell me why it will be only aliphatic amine. Why primary is clear, but why aliphatic only? Tertiary alkyl halide will undergo elimination, something like that. No, my dear, I asked that. See, it will be primary. It is so clear. तू अल्काइल ग्रुप टर्शरी भी ले लेगा, अगर जो तू बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये अल्कीन भी बनाएगा ना, तो भी बाय प्रोडक्ट तो मिलेगा ना प्राइमरी अमाइन. बात वो नहीं है. बात क्या है, ये टर्शरी अमाइन तो कभी देगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमेशा तू अल्काइल को टर्शरी ले लेगा. यू कैन टेक अल्काइल टर्शरी, लेकिन मान लो हमने टर्शरी अल्काइल ले लिया, इस तरह से हमने टर्ड ब्यूटाइल ले लिया, तो भी ये जो N है ये तो NH2 ही बनेगा ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So by taking alkyl tertiary, will it be of any use to me? No. No.
So my question is not why primary, because it is very clear it has to be primary only. Whatever you do, you can take alkyl group, you can take primary, secondary, tertiary. But तो भी क्या है, amine तो primary ही बनेगा. Yes, ma'am. Because by taking tertiary alkyl, amine doesn't become tertiary. Yes, ma'am. Amine will be tertiary only when nitrogen is connected to 3 alkyl groups. 3 alkyl groups. I'm not asking that. I am asking why always aliphatic? Aliphatic क्यों? Electrophilic substitution. Nucleophilic substitution. तो भी भाई, why electrophilic cannot be in aromatic? Ma'am, Yeah. steric hindrance. अरे यार, तुमने कितना बड़ा हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्वेश्चन पढ़ा है. हेलो एरीन्स, अगर मैंने यहाँ एराइल हलाइड लिया होता, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक Substitution. than haloalkanes. Yes or no? Yes, ma'am. तो ये Yes. याद रहना चाहिए अपने को, बहुत जरूरी है. Our revision should be very very proper. अब बाकी हो गया, ये देखो, ये CO एक एक डैश है वैलेंसी, और ये जो OH है, this will get connected here. ये जो OH है, this will get connected here. Is it clear? और वो जो बाकी है तुम्हें दिख ही रहा है, it is C2H5. Correct? Yes, ma'am. Yes. What is its name? Phthalic acid. And this is Ethylamine. correct. So that is Gabriel phthalimide reaction. Now something interesting. Hydrazinolysis. When we took phthalimide, then after treating it with that alkyl halide in between, we got alkyl phthalimide. Yes or no? Yes, ma'am. Was the structure like this? Yes. Yes, ma'am. Can you say hydrazino? Meaning this reaction must be with Hydrazine. very good. So see, I can directly get. Okay. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I get RNH2. Now see, we are taking online. Are you finding any difficulty? It is so No, ma'am. clear. It is as good as you are learning from me in our classroom. This is what we will get. This is phthalic hydrazide. What it is? Phthalic hydrazine. Hydrazide. Id. Again, it is 1 degree. Aliphatic.
वो तो एलिफेटिक Yes. बनेगा, क्योंकि जब भी ये यहाँ टूटेगा यहाँ या इधर डायरेक्ट वही बनाएगा. इन दिस रिएक्शन इधर पे नहीं है ब्रेक, क्योंकि यही तो NH बना है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is hydrazinolysis. Now, one more important reaction, you know, using Ma'am, can you repeat? what? I got disconnected. No problem. Using Grignard's reagent. Hiral, you didn't see hydrazinolysis? No. Okay. It is like this. You take same alkyl phthalimide, okay? Alkyl phthalimide, and you convert it to alkyl amine by using hydrazine. Yes? Okay. You want me to say anything else here? No. Okay. We have to write it now. Just wait. I'll tell you when to write. Okay. Now we move ahead. Here, using Grignard's reagent. Again, a very simple reaction. If I take a monochloro, meaning एक chlorine वाला. If I take a monochloroamine, meaning instead of RNH2, it is ClNH2. And I treat it with Grignard's reagent. I think it is clear to you what I will do. Yes? Yes, ma'am. So we will be getting the RNH2. RNH2. Plus, और मान लेते हैं अगर ये हैलोजन भी क्लोरीन है तो इधर सीधे सीधे मिल जाएगा MgCl, isn't it? Yes, ma'am. Clear? Now, important concept, preparation of secondary amines. Did you see very carefully? Whatever methods we did in last two lecture, in all of them, we prepared Primary amine. Primary amine. So now we are coming to preparation of Secondary amine. secondary amines. Now the reaction which I am writing now, you know, we have done in halogen derivatives.
I don't know whether you remember or no. We have learned if we treat alkyl halide with ammonia, what we will get? Alkyl halide with alcoholic ammonia at 373 to 423 Kelvin, what we will get? No one? Hello, are you there? Ma'am, amine, like primary amine. हाँ, प्राइमरी अमाइन. और अगर हमने अल्काइल हलाइड एक्सेस में लिया है तो वो अल्काइल हलाइड, अगर हमने हैलोजन एक्सेस में लिया है, देखो ऐसा अल्काइल हलाइड अगर हमने एक्सेस में लिया है तो वो जो हमें प्राइमरी अमाइन मिला, इट विल अगेन, Quaternary. अगर ये एक्सेस में है तो इट विल अगेन रिएक्ट विद Ammonia. अमोनिया. अमोनिया थोड़ी एक्सेस में है भाई, अल्काइल हलाइड एक्सेस में है, तो जो प्राइमरी अमाइन है विल अगेन Will react with alkyl halide. विल गेट Secondary. secondary अमाइन. तो बस वही हम यहाँ बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं. गॉट इट? मैम लेकिन वो करते करते क्वाटरनरी बन जाएगा ना. हाँ, पर अगर मैं डिस्टिलेशन वगैरह करके किसी तरह से उसे निकाल लूं तो एक मेथड तो मिल गया ना मुझे. राइट ना? हम ये थोड़ी पढ़ रहे हैं विच इज द बेस्ट मेथड. ठीक है, मेथड है. Okay, and how to stop the reaction at secondary amine? By taking calculated amount of reagent. What I mean by that? What I mean by calculated amount of alkyl halide? मतलब जितना मुझे जरूरत है उतना ही डालना है. उतना ही I will use, उतना ही reagent I will use. That is, I will not use excess alkyl halide, but I will be using calculated limited required amount of alkyl halide. Correct? So if yes H3NH2 and I treat it with then I will get Mehak, tell me the common and IUPAC name of the secondary amine which we formed. Dimethylamine and ethylamine. Dimethylamine and N-methylmethylamine. IUPAC name is N-methylmethylamine. Okay, to make secondary amine which is dimethylamine or also called N-methylmethanamine. Correct? Yes, ma'am. yes Something very interesting. Okay, just to check whether anyone is sleeping, what are we preparing right now? secondary amine. Secondary amine. Secondary amine. Oh, very nice. All are awake. Actually, my teaching is so good now that everybody is awake. Are nobody said yes? Oh. yes ma'am. Yes, ma'am. So reduction of isocyanides. Can anyone tell me any other name of isocyanides? Isonitrile. Oh, something better. कार्बाइलामाइन. तो हमने लिख दिया. मैम मैंने पहले ही बोला था पृथ्वी का आवाज ओवरलैप.
Okay. Carbylamides. So I am taking isocyanide, say methyl isocyanide. Methyl isocyanide. And we reduce it with reduction के लिए क्या use करेंगे? What I will add? SnHCl. अच्छा निकल और प्लैटिनम डाला तो क्या यूज कर रहे होंगे? Molecular hydrogen. Molecular. All the pi bonds will become. Single bond. So how many H do you need here with carbon? 3. And how many you need here? Because One. nitrogen is trivalent, 1. So total how many molecules of H2 do you need? 2. So that is the reaction. Is it clear? Yes, ma'am. So this is methyl isocyanide. Methyl isonitrile. Another name, carbylamine. This is dimethylamine. Yes. What is the IUPAC name, Hiral? N, N, dimethyl. No. Dimethylamine. No. No. Long chain is methanamide. N-methyl methanamide. N-methyl methanamide. Ma'am, I have a doubt. Yeah, tell me. Ma'am, in this reaction, why didn't we use SnHCl or Na C2H5OH? Because in any reaction, we can use tin and HCl, we can use molecular hydrogen, anything. But usually nascent hydrogens are used when the compound is less reactive. So to activate the reaction, we go for fresh preparation of active hydrogen atoms. But when we know that the reaction will take place nice with molecular hydrogen, we use that also. Even in the reaction where we reduce nitrobenzene to phenylamine, we can use molecular hydrogen in presence of nickel. Okay? Yes, ma'am. Now, manage reaction and all that is not there for you. It is in advanced IIT syllabus. So I will not go to that, and we will stop the methods of preparation of secondary amine here only. Now Ma'am, method of, yeah, say. Ma'am, can you show the reaction once? Which one? If it's that IIT ones. Why you want manage reaction? It is, if you want, I'll just write one reaction. Just one. I'll just write one reaction for your, satisfaction. Okay, thank you. But actually we don't need it. Now see, suppose manage reaction. So basically in manage reaction, we will be taking acetone. We will treat it with formaldehyde and we will put primary amine.
In acidic medium, we will heat it, which will lose a molecule of water. And I'll be getting CH3CO, CH2, which I took from here, CH2, CH2, which is of acetone, CH2, CH2, okay? And I get NHR. Now see, one H from here, and OH is removed, so I am writing minus water. This is called manage base. Now I think you understood next what to do, or shall I write? No, I should write. Okay, if you reduce it with LiLH4, lithium aluminium hydride, then you will be getting CH3. You know, carbonyl group gets reduced. To alcohol. Yeah, and if it is very strong, very large amount added, then we will be getting like this. Got it? Yes, ma'am. Thank you. Secondary amine. Okay. So I taught you that, but every time I will not, because none of us are appearing for advance. Okay. Yes, ma'am. So the batches where I take advanced coaching, you can come there, no problem at all. Now here. Now I'm preparing tertiary amine. Actually, preparation of tertiary amine is not there in the syllabus. Okay. Then why I'm teaching? Because there is one reaction where they have given the reaction in chemical properties of ammonium salts. Got it what I'm saying? They have given in chemical properties of quaternary ammonium salt. और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के वो केमिकल प्रॉपर्टी को जब हम करेंगे तो हमें टर्शियरी अमाइन मिलता है. तो एक ही बात हो गई ना, या तो मैं पढ़ूं उसको इस तरह से कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, लेकिन उसमें मुझे प्रिपेयर हो रहा है टर्शियरी अमाइन, सो आई कैन आल्सो कॉल इट प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So that is why I am taking it here and I am teaching that. Preparation of tertiary amine. Anyone remembers the name of reaction? Exhaustative alkylation. Oh, alkylation में तो tertiary amine secondary से prepare होता है. It is Hoffman's elimination. My dear, you said preparation of tertiary amine by Hoffman's exhaustive alkylation. अब देखो exhaustive alkylation में क्या होगा, इस तरह से मैंने secondary amine लिया रहेगा and I will put calculated amount of alkyl halide and I can get tertiary amine, isn't it? हाँ, sorry. But मैंने क्या कहा था starting reagent? Quaternary ammonium salt. पर मैंने क्या लिया था? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. यही बोला था ना मैंने. हाँ. तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो यहाँ नहीं है. तो whenever you are giving answer, एकदम एकदम एकाग्र चित्त होके उसको सोचो, है ना. बिकॉज इट्स नॉट कि तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आता है, पर तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी. तो ये जल्दबाजी से हमारे फाइनल्स में क्या होगा?
वैसा कुछ नहीं होगा, आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। तुम्हारा पूरा नीट का बैच है एंड आई वांट तुम लोग, मतलब जो 4 लोग तुम नीट के हो, आई वांट कि तुम सच में क्रॉस करो 600 650, लेकिन तुम उतना अभी पढ़ नहीं रहे हो, अभी और बहुत मेहनत है। और जय जय को तो बहुत बढ़िया मैं ट्रेन कर दूंगी बिट्स के लिए। लेकिन मेहनत अभी कम है। टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड obtained by treatment. I'm just writing little theory here, okay? I'll just remove this because it will be of great help. थोड़ा theory इसका लिख लेंगे तो आपको easy पड़ेगा. Obtained by treatment of tetramethyl ammonium halide. अमोनियम हलाइड का फॉर्मूला बोल सकते हो, अमोनियम हलाइड। अमोनियम हलाइड, नो? NH4X. या जैसे बचपन में पढ़ा था, अमोनियम बड़ा फेमस सॉल्ट था, हमेशा आ जाता था इधर उधर से कहीं से भी। अमोनियम क्लोराइड, Ammonium chloride. हाँ हाँ हाँ. बस इसी की तो बात हो रही है। देखो इतना छोटी सी चीज है, लेकिन अमोनियम हलाइड बोला तो अरे यार पता नहीं ये क्या है ना? कुछ भी नहीं है, अमोनियम हलाइड। और ये 4H की जगह अगर मैंने 4 क्या डाल दिए Alkyl group. तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, Alkyl ammonium. which is a quaternary ammonium Salt. salt. अब देखो कितना सिंपल है, यस और नो? Yes, ma'am. कुछ भी नहीं है, पूरा सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। अपन उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं ओवर सोच के, इसीलिए बोला जाता है ओवर मत सोच पर सोच। टू गिव, तुम बोले ही नहीं, आई थॉट यू विल से बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग टर्शियरी अमाइन। अरे भाई सो गए क्या? नहीं मैम। तो रेडी? यस मैम। तो तुम लोग स्ट्रक्चर बोलो टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। CH3 4 times. स्ट्रक्चर CH3. गला खराब हो गया क्या? आवाज ही नहीं आ रही, ऐसी आ नहीं रही। नहीं, CH3 फिर और CH2. अच्छा CH3 और फिर X. ओ माय गॉड, यू आर सी OH। बेटा। क्या? हाँ, अच्छा हाइड्रोक्साइड, ओके OH. OH minus and a plus here. Ammonium hydroxide. Tetramethyl ammonium hydroxide. ओके, मैंने आपको टेट्रामिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा था। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? obtained by treatment of tetramethyl ammonium halide. तो हम बस समझ रहे हैं कि ये अगर हमें बनाना है तो हम टेट्रामिथाइल अमोनियम हलाइड से बना सकते हैं। कैसे? Moist Ag2. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग
मटेरियल में पहले से हाइड्रोक्साइड लेके नहीं बैठेंगे, अब हम हाँ पहले halide. हलाए। मैंने तुम्हारे आंसर को रॉन्ग क्यों बोला था? क्योंकि आपने पहले हाइड्रोक्साइड पूछा था. हाँ, मॉइस्ट यानी Ag2 AgOH water. जल। So what I'll get? Tetramethyl ammonium hydroxide. Yes. So tetramethyl OH minus plus. yes. Yes ma'am. अब इसको क्या करना है हमको? ऊपर लिखा है क्या करो? Heating. Heating. And when I heat it, what I get? Tertiary amine Amine. and methanol. And methanol. Am I writing very slow or is it fine? क्योंकि मेरे ख्याल से समझने के लिए थोड़ा स्लो लिखें तो अच्छा है, रिएक्शन पूरा छप जाएगा खोपड़ी में फिर। Yes ma'am. तो ये हमें मिला टर्शरी अमाइन, मिल गया। ये इधर कट हुआ, कट। सो व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट? Methanol. Methanol. Is this clear? Yes ma'am. Now Yes, ma'am. what will be the product? Let us see further. If ethyl, this is a very famous question, huh? This will come in your competitive exams. What happens when ethyl, not tetra, tri, because एक ethyl ले लिया तो बाकी तीन ही ग्रुप बचेंगे। Yes ma'am. Is heated. Will you participate in writing the structure? Yes ma'am. Yes, ma'am. NCH3 एक और CH3 CH3. C2 CH2. C2H5 CH3. Correct. and OH Bracket. minus. We can write positive here also. Yeah, positive and OH minus. Now, what you have to understand, I will get trimethylamine or I will get ethyl dimethylamine. Trimethylamine. Why? मैम इसमें वो ऐसा होता है ना कि सब जो छोटा ग्रुप है वो निकल जाता है, ऐसा मैंने शायद पढ़ा था। मतलब अभी देखो क्या होगा, ये इधर से ना एक H, इधर से एक H, ऐसा अलग लिखा मैंने, ये बन जाएगा क्योंकि आप हीट कर रहे हो। तो आपको मिला CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस water. वाटर। H2. अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. और अगर आप इथाइल डाइमिथाइल अमाइन बनाते वो आपको माइनर मिलता थोड़ा प्रोडक्ट, बिकॉज हियर हॉफमैन्स एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। देखो एलिमिनेशन में पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे ही 2 कार्बन आ गए। पहले वाले में क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्कोप ही नहीं था, राइट? एलिमिनेशन में अल्कीन मिलता है, पाई बॉन्ड्स मिलते हैं, यू नो दैट। Yes.
Now suppose I have something like this. See here what I am doing. You have such questions in your textbook. And I hit. Tell me, क्या मिलेगा? एक तो ये ट्राइमेथाइलमाइन. या Trimethylamine. अब अल्कीन कौन सा मिलेगा? 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन? 1. 2. 2 Two. ब्यूटीन क्यों मिलेगा? क्या? Why we will get 2 butene? More substituted वाला. More substituted alkene is major. That is called. Sedgwick rule. तो फिर सेड्सफ एलिमिनेशन बोलूं ना, हॉफमैन क्यों बोल रही हूँ? बेचारे ने कुछ तो अलग किया होगा ना. तो हॉफमैन ने यही बताया कि whenever you take quaternary ammonium hydroxides, Okay. and you heat them, then less substituted alkene is major. Okay. And whenever less substituted alkene is major, then such a elimination is Hofmann's elimination. While when more substituted alkene is major, that is Sedzev's Sedgwick. elimination. Sedzev's elimination takes place in alkaline medium, while Hofmann's elimination takes place by simply heating the quaternary ammonium salts. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, we learnt it under the heading. हमने क्या heading दिया था? Preparation of. Hofmann elimination. No. Tertiary ammonium. हाँ, हमने किया preparation of tertiary amine. Amine. Okay, but हम उसे Hofmann's elimination heading देके भी पढ़ सकते थे. तो हमारे सिलेबस में वो हॉफमैन एलिमिनेशन का हेडिंग है, यानी वी हैव इट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ Quaternary ammonium. Yes, quaternary ammonium salt. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, is there any particular reason कि ये less substituted वाला is major? Yeah, that is the root of reaction. मैं mechanism में सिखाऊंगी. Okay. ठीक है? I'll come to mechanism ना, जैसे मैंने पहले कराया था, फिर SN1 SN2 mechanism बताया. mechanism में बताऊंगी. पहले अभी तो हम समझ लेते रिएक्शन कौन कौन से कितने हैं, क्या रिएजेंट है, पहले उतना याद हो जाए. Yes, ma'am. ठीक है? वैसे इसका मेरा बहुत अच्छा YouTube पे एक वीडियो है एलिमिनेशन पे, लेक्चर नंबर 26 ऑफ माय हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन. ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes का वीडियो है. उसमें बहुत मतलब एलिमिनेशन का पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है. इट इज टू गुड. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू प्रिपेयर ऑल द अमाइंस? I want primary, secondary, tertiary, all mixture. You remember तुम लोग बोल रहे Yes. थे Excess वाला. है ना? मैंने कहा नहीं, मिक्सचर नहीं मिलेगा अगर मैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड लूंगी. Hofmann hemolysis. या तो अब तो मैं बोल रही हूँ मुझे मिक्सचर ही चाहिए. Now what is the heading? The heading is preparation of mixture of Ninth. primary, secondary and tertiary amine.
1 degree, 2 degree, 3 degree amine. You all know this? Shall I write or shall we skip this? Please tell me. We can skip. Huh? Skip कर दो मंचल को. Skip कर दूं everybody? बोलो हाँ. बोलो लिखना है तो इतनी देर में तो लिख के हो जाएगा. इतना मत सोचो. Others, shall I write? Yes, ma'am. Okay. इतना मत सोचा करो. इतने में तो अभी तक एक लाइन मेरी लिख के हो जाती. So if I take a alkyl halide and I am treating it with ammonia, correct? Then, okay, I'm just writing, I'm carrying it down at the 73 Kelvin. I can make use of aqueous or alcoholic, any ammonia, that's fine. Now I'll be getting C2H5NH2 plus HI. Now we can continue. This again reacts with C2H5I. Since you've understood the reaction, I'm writing here only minus HI. Can you understand now what I'm doing? So we will get C2H5NH. Again, we can treat it with C2H5I minus HI. This simply means this alkyl halide is in? Excess. Yes. So I'll get a tertiary amine. Correct? And this can react further. Yes or no? Yes, ma'am. Why it can react further? Can anyone tell me? Form quaternary. Why? Ma'am, because of lone pair maybe. Yes, nitrogen has a lone pair, and when this undergoes heterolytic fission, you get ethyl carbocation, electron deficient species. So the lone pair of nitrogen gets donated like this, and I will get quaternary ammonium. Quaternary. So, Can anyone tell me the name of all the products one by one? Anyone, you can just try. If you're wrong, I'll tell you. First one, ethanamine. Yeah, fatafat. Second one, N-ethyl ethanamine. Hmm. Then third one, N-ethyl, N, diethyl ethanamine. Hmm. Okay. And what about salt? Tetraethyl ammonium. Tetraethyl ammonium iodide. Okay. Can anyone tell me what will be the order of reactivity of alkyl halides here? tertiary, secondary, primary. Primary, secondary, tertiary.
मैम 3 डिग्री तो एलिमिनेट कर देगा ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 डिग्री एलिमिनेट कर देगा. शायद. I said a type of alkyl halide with respect to halogen. Order will be Ri. वो RI, RBR, RBR, RCl. RC. Yeah. हाँ अच्छा वो टर्शरी वाला नहीं, वो तो अलग ही बात हो गई. हाँ हाँ. अब अगर यहाँ मैंने excess ammonia लिया, if in this reaction I use excess ammonia. then primary amine will be the main product. Yes ma'am. Got it? Yes ma'am. And if excess alkyl halide is used, then tertiary amine is the main product, major product. Got it? मतलब Yes. entire tertiary amine doesn't get converted to salt. Got it. You were not knowing this. Right? Yes, ma'am. ma'am. Now one last method to prepare mixture of primary, secondary, tertiary amine. That is, my dear, if instead of alkyl halide we take alcohol, instead of alkyl halide, even if we take alcohol, say ethanol, and we treat it with ammonia, and the alcohol vapors are used, and this alcohol vapors and ammonia are passed over heated alumina, then we get ethylamine, again chain reaction, which again reacts with vapors of alcohol and gives me N-ethyl ethanamine, a secondary amine, which again reacts with ethanol and gives me N-diethyl ethanamine, and you know this will again react with, because of the lone pair on nitrogen. Can you name the product before I write? Before I write. Before I write. No, no. Quaternary ethyl ammonium. अब तो मैंने लिख दिया. अरे मैम नाम कहाँ लिखा? Ethyl ammonium hydroxide. Yes ma'am. Tetraethyl ammonium hydroxide. Hydroxide. So